0.0.0, and it was something like this I was expecting. Okay, you have taken the shortcut method. ठीक है चलो I don't want the shortcut method. Sure. So this is the range of IP addresses. Yeah, this is हेलो the range of IPv4. Okay. Now we are अंकित जी moving ahead and अंकित जी सौरभ बोल रहा mute हूँ यूट्यूब yourself. से वो पागल सर में पड़ गया था एक हेल्प चाहिए Mhm. एक लिनक्स का वो चाहिए आईएसओ Why can't I mute you all? एक रिक्वेस्ट आया है लिनक्स सर्वर क्रिएट हाँ 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 128 जी वाला हाँ Actually, तो the fault is from उसके my लिए end. It's okay. I'll stop asking the questions to you all, so that if that is the case, you will not be asking me any answers, and you won't forget to mute yourself. You unmute yourself. चलो. नए वाले उसमें Until तो and सेवन unless you पॉइंट become कुछ बोला था sensible सेवन enough, I पॉइंट will कुछ mute you all. I will keep muting you all. 7.9 So the अपडेटेड है next topic, which we are trying to learn, which we are trying to understand in the concept of IP addressing, is subnet mask. 7.9 ना ठीक है तो मैं एक So बार what मैं do you ये mean by पूछ लेता subnet हूँ mask, and पार्टीशन what is the need of this subnet mask is what we have to एक बार understand मुझे first. बताएंगे वैन और So here I'm taking back towards the history of IP addressing. IP addressing की जब शुरुआत हो रही थी वहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ. तो IP address मांगी तो उन्होंने was तीन टीबी है basically फिर 3 टीबी सेंड introduced करना था for फिर टीबी two के लिए कोई reasons. दिया IP था address उन्होंने जब introduce हुआ था तो उसके पीछे दो reasons. There were two main reasons for this. ठीक The है first reason was that ठीक है कि ठीक okay we should assign and unique IP address अच्छा ठीक है to each computer, and the second objective was to okay perform ठीक है the पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ communication फिर आया between करें IP ठीक है addresses, ठीक है perform the थैंक यू communication between the computers. So this was the two main objective of introducing the IP addressing. Now, of course, we have achieved with the first objective because we have okay approximately 4.2 billion IP addresses available in IPv4. IPv4 के बारे में अगर आपका रिवीजन हुआ है एन प्लस में तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि IPv4 में लगभग 4.2 बिलियन 429 करोड़ IP एड्रेसेस अवेलेबल हैं. तो ठीक व्हेन वी से कि यूनिक आईपी एड्रेस ठीक है सबको यूनिक आईपी एड्रेस मिले ठीक है जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर कंप्यूटर को हम नया आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं और सिंस वी हैव 4.2 बिलियन तो हम आसानी से हर एक कंप्यूटर को नया आईपी एड्रेस ठीक है अलोकेट कर सकते हैं. सो ओके टारगेट नंबर 1 इज अचीव. व्हाट अबाउट टारगेट नंबर 2? टारगेट नंबर 2 क्या है? ठीक है. Target number 2 is communication, and now here is the change. Now in order to perform the communication between computers, yeah, in order to perform the communication between hosts, yeah, between each other, okay, between the IP addresses, logically IP address is being divided
into two main sections. ठीक है, फिर से कहता हूँ, कम्युनिकेशन अगर मुझे आईपी एड्रेसेस के बीच में चाहिए तो आईपी एड्रेस को लॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज द नेटवर्क बिट, and the second section is called as the host bit. Now, in order to make you understand what is network bit and what is host bit in a better way, okay, I am taking an example. Yeah, I would like to show you the concept of network bit and host bit with the help of an example. And what is that example? I am going to take the example of our mobile numbers. अपने जो मोबाइल नंबर्स हैं या सेल फोन नंबर्स जो है उनका कॉन्सेप्ट लेके मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ. So how am I going to explain this? Okay, how is that I'm going to explain you all? It is going to explain like this. So our mobile number, you take any mobile number. So randomly I'm taking just numbers. So let us say this is one of the mobile number. Let us say this is one of the mobile number. Okay. Uh, this is the third one. Fine. Mm, this is the fourth one. Fine. You take any mobile numbers, take it randomly. You take the fifth one. This is the sixth one. Okay. This is the seventh one. Fine. So like this, all the mobile number exist, and all these mobile numbers I am putting into the category of host bit. Fine. And if all the mobile numbers are coming into the category of host bit, then what comes in the network bit? Network bit में क्या आता है? नेटवर्क बिट में आता है अपने कंट्री का कोड. द कंट्री कोड वेयर वी स्टे, ओके, इज व्हाट आई एम पुटिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ नेटवर्क. And what is our country code? The country code of our nation is 91. So this 91 is what I am putting into the network bit. So if I combine both, okay, it becomes the entire network address and the mobile number address like this. Fine. So what is the objective of dividing the network bits and host bit? नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, रीजंस क्या थे? द रीजन वाज दैट, okay, if let us say my first number wants to connect with the last number, सर 11 वाले का तो दिखा रहा है एल आई डी 1. both the numbers will be able to ये है connect ना each other एम एस आई if 11 डेटा they स्टोर एल belong एन to the एल एल same network. 1 1. I repeat और and understand what I'm saying. Both the mobile numbers, okay, the sender and the receiver, okay, will be able to connect each ये other 18 वाले का if एम एस and आई only if 11 they belong डेटा to the स्टोर एफ same सी network. प्लान 1 इसका तो है इसीलिए 110 that's the reason whenever I want to connect from और one 40 डी number to another, I can connect without country code, because तो सर वो by जो मैंने default दो शीट all शेयर की these थी ना, cell phone एक्चुअली कुछ शेयर numbers ड्राइव will में be मैंने दो अलग belonging अलग to उसमें the भेज दिया, country दोनों पे code सेम ही which is आईडी है ना, 91, बस एक which I am calling it as a network bit. Fine. So the same is available for other countries as well. So let us say one of the country code is 465. Now I don't know okay, whose country code is this. Just I'm taking it as an example. Make no controversies. Okay, sir, this country code does not exist. The telephone number does not exist. Okay, it is just an example for you all to make you understand. So 465. Okay, and let's take okay, this number. Okay, and let's take this number. Fine. Let's take this number. One more number is what I will take it up. This number. Okay. So all these numbers will able to connect each other if they belong to the same network.
Certainly, all these mobile numbers will be able to connect each other if they belong to the same network. हेलो Certainly, दिगंत सर two IP addresses. सर इवनिंग सौरभ बात कर रहा हूँ वीएम टीम से This is one of them, सर गोपाल सर and सॉरी टू कॉल यू दिस टाइम सर this is another one. Both the सर IP गोपाल सर तो address बात will रहेगा be उसके लिए able to communicate, will be able to ping लिनक्स each वर्जन के लिए other वर्जन उसके if लिए and only सर उसमें if जो they स्पेस belong to एलोकेट the करना है same उसमें आप network. फाइल सिस्टम का प्लीज़ एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि डायरेक्टरी तो को अगर एक ही नेटवर्क में दोनों आईपी एड्रेसेस नहीं सर अवेलेबल उसमें हैं किस तो डायरेक्टरी को कितना तभी स्पेस एलोकेट करना कम्युनिकेशन है जैसे होगा वेब होम होगा टैब तो इसीलिए ठीक तो है उनको जब कितना हम कितना वील स्पेस लाइन एलोकेट में करना है ठीक है अगर आप देखें तो आईपी एड्रेस दे रहे थे वो सभी आईपी एड्रेस एक ही नेटवर्क में बिलोंग करते हैं ऑल द आईपी एड्रेसेस सर बिलोंगिंग टू वन आपके साथ बात हुआ नेटवर्क होगा तो इसका and एक that's the reason they were सर्वर able to ऑलरेडी है communicate it so सिंगापुर I में have given it as a सर सर 1.1 सेम सर 1.2 1.5 1.7 so all these IP addresses are belonging to the same network and that's the reason they were able to ओके communicate. ओके 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 If at all like you ठीक है सर assign आप each प्लीज़ एक बार मंडे computer कंफर्म in a कर दीजिएगा different देन IP आपको सेम डे हम in a अपडेट different कर network, टीम क्रिएट कर देंगे certainly they would have not been communicated. Okay, at least in this part, at least in this topology, it would have सॉरी not communication would not have been possible over here. सर कंफर्मेशन चाहिए जो Fine. लिनक्स सर्वर So में that is डायरेक्टरी the बनी है तो reason किस of डायरेक्टरी को हमें कितना स्पेस dividing the एलोकेट करना है IP address into network bits and hosts. Hope you understand. Let me unmute you all. राइट And राइट if सर you have any queries, you can ask me. यस सर 3 TB अप्रॉक्स है उसमें Hmm. Yes. Sir, Yes. sir, the page उसमें वो you have written 1010, फाइन please फाइन नो एक बार थोड़ा प्रॉब्लम क्लियर कर दीजिए. सर मेरा नाम सौरभ कौन सा वाला 1010? ये उस बीच में. Yes, yes. Okay, sir. Last column. Yeah. ये वाला. Yes, sir. ये आईपी एड्रेस को कन्वर्ट किया बाइनरी में बस और कुछ नहीं किया. नहीं वो सर लास्ट में सर किस पेज पे 1100. कहाँ है बच्चे? ये ही सर ये जैसे कि 128 के नीचे 1, 64 के नीचे 1, 32 के नीचे 0. ये क्लास एक ये बता रहा है तो नो 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 सर जस्ट ऊपर वाला ऑक्टेन सर 1 ऑक्टेन बाइनरी 2. कन्वर्जन वाले भी पूछ रहे हैं ये। तो ये वो ये लास्ट. 128 64 ये कहाँ से है ये पता नहीं है. नो नो सर उसके बस नीचे वाला कॉलम. हाँ ये वही जो वाला. आईपी एड्रेस है ठीक है मैं वही बता तेरे को ये जो आईपी एड्रेस है इस आईपी एड्रेस को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है. हम्म. हम्म, तो पहले ऑक्टेट में 192 है तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ठीक है हमें कुछ नंबर्स कितने नंबर्स को जोड़ के 192 आता है बस उन नंबर्स को वन करना है. जैसे यहाँ पे देख थर्ड ऑक्टेट में 2 है तो यहाँ आरू इधर देखो आइए एक थर्ड बार। ऑक्टेट में 2 की जगह बस आरू 1 कहाँ है? किया. आरू को बुलाना। और अगर 3 लाना है तो यहाँ देखो 2 + 1 3. तो ऐसे कितने नंबर्स को जोड़ के मुझे 192 लाना है उतने नंबर्स को मैंने जोड़ा. गॉट इट सर गॉट इट. ओके. Any doubt in this part? Network bit and host bit? Fine. What So will be the network bit for this IP address? this is मेरा just बैग wait. लेके आ। I'm coming to that point. Okay. Just wait. Fine. So okay, this was the basic objective of performing the communication. Okay. Now the second challenge was that the given IP address. Okay. If this is the IP address which I have assigned to any of the computer, in this IP address, how many bits are in network and how many bits are in host? How are we going to identify them? I repeat the question and try to understand the questions once again. In a given IP address, how many bits belongs to network and how many bits belong to host? How is that we are going to identify it? So the answer is that we are going to identify it with the concept and that concept is called as subnet mask.
So with the help of subnet mask, we are going to identify how many bits are in network and how many bits are in host. Okay, so what is the network address? Certainly we are going to find out with the subnet mask as well. So coming on to the definition of subnet mask, what is the actual definition of subnet mask? Now this is what it is. Okay, subnet mask is actually used to identify the network bits of an IP address. ओके, तो यहाँ पे ठीक है, नेटवर्क बिट कितने हैं ये गिवन आईपी एड्रेस से हम पता कर सकते हैं. फाइन. Note down this definition, write down this definition, make a golden frame of this definition, because in the coming days you are going to, what you say, uh, clear many concepts of this. Often students make a lot of mistake that the subnet mask is used to identify the network bit and host bit. But it is not so. Okay, it is only used to identify the network bit of this one. फाइन. सो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ये हम करते हैं. फाइन. सो if this is the subnet mask, yeah, if this is the definition of subnet mask, certainly we have a formula as well. Fine. Now straight away I'm giving you the formula because okay, the reason, yeah, the history of introduction of formula is very complex. ये क्वेश्चन मत करो कि सर सबनेट मास्क क्लास ए का 255 ही क्यों है, क्योंकि अगर मैं उसका आंसर देने गया, आई नो द आंसर, अगर मैं उसका आंसर देने जाता हूँ तो आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है, शायद आपको समझ में ना आए. समझाते समझाते शायद हम सबनेट मास्क क्या है वो ही भूल जाए, क्योंकि सबनेट मास्क ऐसा कोई व्हाट यू से कॉन्सेप्ट ही नहीं है. यू विल कम टू नो. ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेट मास्क इफ आई गिव यू द आंसर फॉर दिस. तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दे. ओके, इट इज समथिंग लाइक कि क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस. ठीक है, जितना चलता है चलने दो. ओके, डोंट आस्क कि ये कहाँ से आता है. ठीक है, इट इज कम, डोंट आस्क, आई नो. ठीक है, actually there is no concept of subnet mask, there is one of the concept that is called as network mask. पापा जी ठीक को है, दे देना पहले. नेटवर्क मास्क नाम का एक कॉन्सेप्ट है. उस नेटवर्क मास्क को समझाते 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 इतना कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस कि लोगों ने सबनेट मास्क को ही अपना लिया. ठीक है, इस तरह से होगा. तो स्ट्रेट अवे मैं इससे फॉर्मूला देता हूँ. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री? अपने देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली. न्यू दिल्ली. दिल्ली. न्यू दिल्ली सर. We have a habit of saying the capital of our country is Delhi. That is not a truth. The capital of our country is New Delhi. Okay, but we are so much habitualized of saying Delhi कि we often think Delhi and New Delhi is almost same. उसी तरह ठीक है, सबनेट मास्क है ही नहीं, नेटवर्क मास्क है, लेकिन हम इतने हैबिचुएट हो गए हैं कि we forget the actual name of it. So let's, okay, move ahead and let's go with the process, because you're going to understand with this process only. So let's move ahead. Fine. And fine. So this is the formula. ठीक है, take this as a formula. तो ये सबनेट मास्क का फॉर्मूला है. as you have revised the different classes, certainly, okay, this is you have to revise this formula also, and this formula is for subnet mask. Okay, this is the formula for subnet mask. Fine. And moving ahead, okay, with this formula and with this definition, okay, moving ahead, now let's
try to identify the subnet mask of this IP addresses. Okay, so let us take an example of this. Okay, so let's take this IP address which is 192.168.2.3. Okay, so let me save all these files first. Fine. Let me take one machine and let me assign the IP address as 192.168.2.3. Fine. Now, looking at the IP address, tell me this IP address belongs to which class? ये कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं वो देखो पहले. Class Class C. C, sir. Class C. Okay. And what is the subnet mask of class C? 255 255 255. dot 255 क्लास dot बी 255 dot 0 last. सर, क्लास बी। क्लास B क्या है? सबनेट मास्क है या आईपी एड्रेस है? करेक्ट. पूरा स्पेसिफाई किया करो ना, शॉर्टकट सर में क्यों देते हो? सबनेट मार्क्स है सर, जो आपने आईपी डाला उसका। ठीक है, क्लास ये क्लास सी का है बच्चा. ठीक है, अपनी रेंज देखो 192 कहाँ आती है? 192 क्लास सी में आती है. ठीक है, क्लास बी में नहीं आता, वो क्लास सी में आता है. ठीक है, तो क्लास सी का सबनेट मास्क जो है वो है 255.255.255.0. Okay, now okay, we are performing some sort of calculations in this. हम कुछ इसमें कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं वो देखो. I take the help of this table. Okay, I copy this table and I paste it here. And look here. Okay, now इसे कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, ये कन्वर्शन पहले से ही था. चलो, तो मैं थोड़ा काम मेरा आसान करता हूँ. So this is the conversion of this. Okay, so the first row is IP address and second row is the subnet mask. Fine. Now convert this to बाइनरी. ठीक है, ये जो नंबर है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो. एंड द मोमेंट आई कन्वर्ट इट टू बाइनरी, व्हाट इज दैट आई गेट हियर फॉर 255? हाउ मेनी बिट्स आर वन हियर इन ऑक्टेट वन? 2 bits on है sir. All one, sir, All one, for all bit one, 255. octet one, 1 1 1 1. Yes, sir, all bits 1. octet one, all bits one. For octet one all the bits are one. For No sir, only 255, first two. Octet, Only first two. who is that guy who is telling only first two? Can I get your name please? Why? The name, Save can I Zubair. get your name please? Zubair. जुबेर. ठीक है, मैं यहाँ पे 255 का कन्वर्शन कर रहा हूँ, 192 का नहीं. Sorry sir, sorry. 255 का कन्वर्शन में सभी बिट्स वन आते हैं बच्चा. हाँ सभी आएंगे ठीक है. सभी. तो मैं समझा ठीक क्यों है, बोला. मेरा क्वेश्चन को समझो. ठीक है, आंसर्स गलत सोचते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा. ठीक है, क्वेश्चन को समझो फिर आंसर दो. ठीक है, व्हाट इज द ओके conversion of second octet which is 255? Sir, All are ones. all are ones. What is the objective of 255 for third Same as octet? 1 and 2. all are all are one, ones, Okay, all are ones. और यहाँ पे All bit All ठीक one, are है, 0. All all is are all 0. bit zeros. zero, are all bit zero, sir. all. ठीक है, zero. This is what the conversion is. Fine. Now, if I convert both the numbers, okay, into binary, now what is that we are going to do? In the third process, yeah, in the third row, we are going to perform something called as AND operation. हम यहाँ पे AND operation perform करते हैं. Now, what do you mean by AND operation? One who Both the is from the inputs are competitive bank. if both Just the wait. inputs are Shall I? You know the answer. Just wait. Shall I give the answer? Please wait. Okay. So, what do you mean by AND operation? AND operation is that process. Okay.
One who is from the computer background knows this, but one who is from the non-computer background, let me give them the answer. And operation is nothing but multiplication. Don't make the things complicated. Okay, both the inputs are one, the output is one. No, best the simple answer is multiplication. ठीक है या बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आउटपुट आता है वो तीसरे रो में हम लिखते हैं. एज सिंपल एज इट इज. ठीक है, एंड ऑन परफॉर्मिंग द एंड ऑपरेशन. ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट, लेट्स चेक इट आउट. ठीक है, so 1 into 1 is 1, 1 0 1 into 1 0, 0 0 into 1 0, 0 0 0 0 0 0. ठीक है, 1 second octet 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0. Third octet 0 So 0 Sir, for one 0. 32, second. 1, sir, in the second octet. Just Yes, one sir. second. Okay, so the third row is actually the conversion of output of AND operation. जो तीसरा रो है, ठीक है, which I have highlighted with red color, is actually the conversion of AND operation. AND ऑपरेशन को आउटपुट है. ठीक है, और अगर हम इस आउटपुट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, if I convert the output to decimal, what is that output? That let's check it out. So count the values. Okay, 128 plus 64 in this octet. Okay, 128 plus 64 are the two values, which is 1. Okay, which is 192. What about the second octet? 128 plus 32 plus 8, which is 128 plus 168. 32 is 60. 160 plus 8 is 168. 168. Okay, and 2. what about this one? Okay, only, okay, 2 So, 2 is fine. And look here, all the values are 0. Okay, the subnet mask of this octet is 0. So I know that anything I multiply with 0 will be 0. So straight away, don't perform the AND operation. It is 0. Assign the 0 and straight away the answer is 0. So this is the network address of 2.3. Okay, ये IP address, ठीक है, this IP address belongs to the network of 192.168.2.0. Yes, sometimes it is also called as 192.168.2. That's it. Okay, this is how the conversion is going to happen. Okay, so just one second, let me take this. Yeah, so okay, this is what I got, the output of this. Fine. Now, okay, let's take the second IP address, which is 192.168.2.25. Fine, and let's perform the same process. Okay, first tell me that this IP address belongs to which class, Class C. C. Class C. Class C, C, sir. sir. and what is the subnet mask of class C? It is Sir, 255 255.255.255.0. 255 dot 255.0. Okay, now same process. Okay, we have to perform the AND operation of this. So I'm taking the help of table. I am converting, okay, and I am performing, okay, converting this number to binary. Fine. 1 So it is 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0. 2 is 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0. and 25 is 0 0 0 1 1 0 0 1. Fine. okay, And for 255, okay, it is, all is 1 and 0 and 0. here it all is with all 1. zero. Okay, yes, we have to perform the AND operation.
So one 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 zero 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 one zero zero one zero. One zero 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 one zero zero one zero 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 one. zero 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 one zero. 0 0 0 0 0 0. Fine. Now, whatever the output is there, convert the output into decimal. So the output I get is 192.168.2.0. Two dot. Fine. Now, okay, here is the scenario. Okay, मान लीजिए, ठीक है, let us say there are two computers. Okay, one of the computer IP address is 2.23. What is the okay second computer 192.168.2.25? Fine. Now let us okay connect this. Let me connect both the computers to a switch. Class Fine. So now tell me, ठीक है, this IP address belongs to which network? ठीक है, ये IP address कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है? It belongs to 192.168.2.0. ओके, ये आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है? Same, sir. same सेम, network. ठीक है. So both the machines will able to communicate each other because they belong to the same network. दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है. दोनों ही आईपी एड्रेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि दोनों का नेटवर्क एड्रेस आरू, सेम है. सुन, दिस इज हाउ द मेरा चार्जर प्रोसेस लेके आ जा, वर्क्स. वाइट वाला जा. Okay guys, got the idea what it is? चलो, एनी डाउट इन दिस? आ रहा है No समझ में sir. क्या हो रहा है? Yes sir. यस सर. Sir. Fine. So let me take okay one more switch and let me show you what now for example. Yes ma'am. सर एक्चुअली जो एन ऑपरेशन करते वो किस लिए करते? पता चलेगा. एंड ऑपरेशन इसलिए करते हैं ताकि हम गिवन आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये इसका नेटवर्क ये कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है, ठीक है. तो ये सबनेट मास्क जाओ. से हम इसे फाइंड आउट करते हैं या एंड ऑपरेशन करके हम इसे फाइंड आउट अम्मा करते पास हैं. से दादी मेरी पापा की क्लास नेटवर्क चलेंगे. को क्या आई सर? बात समझ में? भैया खेलना है नेटवर्क को क्या? सॉरी, हेलो? नेटवर्क नेट नेटवर्क को नहीं, पूरे आईपी एड्रेस को ही करते हैं, नेटवर्क को नहीं करते. आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. मतलब नेटवर्क को मतलब क्या कर कहना क्या चाह रहे हो आप? वो चाह रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि एंड ऑपरेटर ही क्यों यूज कर रहे हैं. उनका क्वेश्चन नहीं वो नहीं था बच्चा. आई डोंट थिंक सो. क्या आपका क्वेश्चन यही था कि एंड ऑपरेशन ही क्यों करना नहीं नहीं चाहते हैं? सर, समझ में एक्चुअली किस लिए यूज किए जाते हैं वो पूछना था. हाँ, नेटवर्क बिट को आइडेंटिफाई करने के लिए. यस द समझ. गिवन आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच नेटवर्क, उसके लिए हम एंड ऑपरेशन करते हैं. फाइन. यस चलो सर. अब ठीक है, यहाँ पे और दो मशीन्स हैं. फाइन. Let me connect it to S2 and let me connect it to this one. Let us assign the IP address, ठीक है, which is 172.16.15.43, and let us use the IP address as 172.16.29.56. Now, okay, we have to identify that both this IP address belongs to which network. And of course, we have to perform the similar kind of process that we have done till now. अब ये Fine. But we will do it with a shortcut method. ठीक है, हम थोड़ा shortcut method से इसे करते हैं. सही है. और वो shortcut method क्या है ये देखिए, ठीक है.
पहले आईपी एड्रेस को लिखे, फर्स्ट राइट डाउन द आईपी एड्रेस. द आईपी एड्रेस इज 172.16.15.43 and identify that this IP address belongs to which class. कौन से क्लास में belong करते हैं पहले वो देखें. So the given IP address, check the range. अब Looking देखो at ये the क्लास range, जो मैं बी, I आता can हूँ say वो that छोटा है, it बच्चा को belongs एडवांस to आना चाहिए ना, क्लास class बी, B range एडवांस चीज of आनी चाहिए IP बच्चे को. address. और क्लास बी का जो सबनेट मास्क है फिफ्टी वो फाइव क्या डॉट है? टू फिफ्टी फाइव डॉट जीरो डॉट जीरो 255.255.0.0. वी हैव टू परफॉर्म द एंड ऑपरेशन. ठीक है, हमें इसका एंड ऑपरेशन करना ही है, लेकिन क्या हम बिना टेबल से इसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं. ठीक है, और किस तरह से कर सकते हैं वो दिखाता हूँ. फाइन. सो यहाँ देखिए 172 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं कुछ इस तरह. कुछ इस तरह मतलब, ठीक है, यहाँ पे पहले रो पे करते हैं. It doesn't mean to say बात हो that गई this row is 172. है. Okay, something like we convert it. And what is 255 here? गोलू, 255 is that गोलू, process where all the values are 1, गोलू, isn't it? पानी भी खानी. यस Now, सर. okay, I am going to take it on the other way. मैं कुछ अलग तरीके से अब कैलकुलेशन करता हूँ. मैं अब किस तरह से करता हूँ? इस तरह से करता हूँ. 172 इंटू रोटी नहीं खानी है. 1. ठीक है, इंटू, अब मैंने इंटू भाई क्यों मम्मी नहीं लिया? खानी है क्या? क्योंकि एंड ऑपरेशन ही करना है. और एंड ऑपरेशन और तो पेट में दर्द मल्टीप्लाई करेगा करना है. फिर. सो 172 मल्टीप्लाइड बाय 1 करता हूं. अब 1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 255 का मतलब है सभी वंस है. तो यस 172 इंटू 1 कितना आ रहा है? 172. 72. 16 इंटू 1 कितना आ 16. रहा है? 16. 15 into 0, anything multiplied by 0 0. is चलो जीरो. ठीक है, खाओ. 43 into 0, anything multiplied by 0 is. 0. तो बिना टेबल के सहारे से हम इस तरह से इसे शॉर्टकट तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, या दिस इज द नेटवर्क bit of this. Got it? So here is the actual calculation. So this IP address 172.16.415.43 belongs to which network? It is 172.16.0.0, डॉट जीरो. isn't it? ये उसका, यस यही उसका नेटवर्क एड्रेस है. यस सर. ठीक है, अब यहाँ पे देखें. ठीक है, 172.16.29.56. ठीक है, सबनेट मास्क निकालो. ठीक है, एंड ऑपरेशन करो. 172 वेरी हैंडी, इजंट इट? वेरी हैंडी विद दिस प्रोसेस. ओके, और तुरंत मुझे इसका नेटवर्क एड्रेस पता चलता है. ठीक है, एंड ऑन डूइंग सो, ठीक है, आई गेट दिस पार्ट विच इज 172.16.0. Now both the computers, okay, of S2 are able to communicate with each other because both the IP addresses are belonging to same network. So S1, okay, the machines that are connected to S1 are able to communicate with each other because they are in the same network, and the machines that are there in S2 are able to communicate with each other because they belong to the same network. Okay, fine. Let us quickly assign the IP address so that I want to show you something. तो यहाँ देखें, मैं जैसे ही IP एड्रेस देता हूँ, अब उसका सबनेट मास्क क्या आएगा? सबनेट मास्क अपने आप आएगा और यही आता है. ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये IP एड्रेस कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है. और इस मशीन को भी मैं, ठीक है, IP एड्रेस देता हूँ.
दोनों के नेटवर्क एड्रेस सेम है। अब ये दोनों ही एक दूसरे को पिंग या कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। They are able to connect, they are able to communicate because they belong to the same network. So that's the reason, okay, I can share the file, I can send a file, I can do anything in this. Okay, same is the case with these computers also. The moment I assign the IP address, and this is what is happening, and here is what is happening in second case also. Okay, so both the machines are able to communicate with each other because they belong to the same network. Look here, this is what is happening. Okay, now here is what the truth is. What if I connect both the switches? The moment I connect both the switches, what is going to happen? क्या होगा? Let me put the question on the other way. Okay, will this machine, which is 172.16.2.25, be able to communicate with this machine, which is 172.16.15.43? क्या ये दोनों नो आपस सर, में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं सर। No, No, sir. Because why are they not able to communicate with each other? Because they are belonging to different network. iPad. And anyone who needs a proof, ठीक है, जिसे अगर प्रूफ कर देखना है कि कम्युनिकेट होते या नहीं, तो इस मशीन में जाए और इस मशीन को पिंग करके देखें। तो मैं देखो, ठीक है, अब S2 के एक मशीन को पिंग करता हूँ 172.16.15.43। आप देखोगे कि machine will not be able to ping. Now why is it so? Because they are belonging to different network. Fine. Now what is that we have to do if I perform the communication between these two? अगर मैं चाहता हूँ कि ये मशीन इस मशीन से कम्युनिकेट करे और ये मशीन इस मशीन से कम्युनिकेट करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? So here I am introducing the device, राउटर, and this device is called as a router. राउटर। And the moment I introduce this device, the entire concept of networking is going to revise. The entire concepts of networking is going to change now. आई बात समझ में? Okay, so it is that device, okay, who is responsible for connecting two different networks. राउटर वो डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। तो स्विच क्या कर रहा था अब तक? देखिए, इतने दिन जब हम स्विच के बारे में पढ़ रहे थे, व्हाट इज स्विच डूइंग? स्विच इज आल्सो meant to connect two different computers which belongs to the same network. स्विच वॉज डूइंग दैट पार्ट। एक ही नेटवर्क के अगर, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं तो मैं उसे स्विच से कनेक्ट करता हूं। सो S1 was meant for that if the both the IP addresses belong to the same network, then only it was able to communicate. If both the IP addresses of this one are in the same network, then only switch was used to perform the communication. But what if both the IP address belongs to different network? We have seen that switch is unable to do the connection या communication because the network addresses are same, different, not same. And if you want to connect to do different networks, then we are connecting the same with the router. So router is that device, okay, who is responsible for connecting two different networks. I hope you got the clarity in this. yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब राउटर के बारे में, ठीक है, सब कुछ हमें जानना है।
From now onwards, we'll be okay starting and we'll be explaining each and every part of a router. But as we have discussed that router, yeah, switch has many features. Look here, in day one only, okay, we have written the features of a switch. Certainly today we are going to learn the features of a router. Okay, we are going to learn the features of a router. So what is a router? Okay, so I have just said the definition. राउटर का definition क्या है? अभी just मैंने बोला है, ठीक है? Router is that device who is okay helping me to connect different networks. Okay, so router वो डिवाइस है जो मुझे दो नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है? आई बात समझ में? What is the second definition of a router? It has many definitions. Okay, router is actually a superhero. I would like to go one step ahead and I would like to say that he is Rajnikant. So, as we know, Rajnikant can do anything, isn't it? Yes, sir. So, he is Rajnikant because he is doing many things. He is doing many things and it cannot be explained in points. नहीं But even though, नहीं okay, we are having to understand, we are trying to learn some of the features of it. Fine. So this was one of the feature that it is helping me to connect different network. What is the second definition of a router? The second feature of a router is that okay, आरो the इधर above बाहर the चल के कमरे से interfaces. बाहर चलो Okay, as switch has multiple interfaces, certainly जो मम्मी बुला router रही है also has multiple interfaces. Router के पास भी अलग अलग interfaces को connected है, लेकिन इसका जो interface है वो थोड़ा अलग है, ठीक है? इसके एक इंटरफेस में एक नेटवर्क है और दूसरे इंटरफेस में दूसरा नेटवर्क है, फाइन। तो इसीलिए ठीक है यहाँ पे मैं ये डेफिनेशन लिखता हूँ और वो डेफिनेशन क्या है? ईच इंटरफेस ऑफ अ राउटर इज एक्टिंग, ठीक है, ये एक्ट करता है एज ए each interface of a router is acting as a computer and I mean this definition. Okay, I would like to highlight about this definition. So what do you mean by acting as a computer? ठीक है, कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, let's focus on the interfaces. So I click on a router. Okay, by the way, ठीक है, yeah, let me explain you about the route, ठीक है? So as switch has its own operating system, isn't it? Yesterday only we have learned कि switch के अंदर जिस तरह एक operating system है, उसी तरह router के अंदर भी एक operating system है, ठीक है? और वो operating system कौन सा है? वो operating system है Cisco iOS ही है। मतलब क्या है? ठीक है, मतलब इस router के अंदर भी ये तीन levels हैं। Do you want to check? ठीक है, I check it out. Fine. Look here. I click as an, ठीक है, ये देखो यूजर मोड, इनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो जिस तरह स्विच में वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ऑलमोस्ट सभी पॉलिसीज या सभी प्रोसीजर सेम है, बट नोट द कमांड्स दैट आर देयर इन स्विच are different and the commands that are available in router are different. It is something like your laptop and my laptop. My laptop and your laptop are in the same operating system, which is Windows. But you are using for different purpose. You are using your laptop for, let us say, gaming. But I am using my laptop for teaching. Okay, so the applications are different. Are you getting me? So उसी तरह router का application अलग है और switch का application अलग है.
लेकिन दोनों का ओएस सेम है, ठीक है। सो इसलिए ये ओएस यूजर फ्रेंडली है, दैट्स द रीजन दे से सिस्को आईओएस इज यूजर फ्रेंडली बिकॉज it is deployed on all the Cisco devices with same operating system. Got it? So this is what the speciality of the Cisco iOS is. Okay, now I was talking about the interface. So I click on a config. Now look here, these are the different interface of a switch, of a router. And look here, the moment I click on this interface, okay, I notice that this interface has a MAC address. So nice. It has a MAC address. And certainly we can also assign the IP address as well. So see guys, this interface has a MAC address, we can assign the IP address, okay. And let's compare it with a computer, okay. So what is this happening? Okay, look here. Even this computer has a MAC address, which is P1. And this computer can be also assigned an IP address. So a typical computer, what does the features a typical computer has? All the features are available on each interface of a switch. स्विच के हर इंटरफेस को मैक एड्रेस है, स्विच के हर इंटरफेस को हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं. सो Routers. दैट्स द रीजन आई एम कॉल हाँ सॉरी राउटर. I'm so sorry. It is router. Okay. So that's the reason I am calling it as key. Each interface of a router is acting as a computer. Okay. Each interface of a router is acting as a computer. This is what I say. Fine. Now the question is that okay, we want to check it out. Okay. We want to check that okay, what is the IP address to be given? So I click here. So I click on 0/0/0, and here I want to show you something. So the question comes that we have to assign the IP address. ठीक है, स्विच के इस इंटरफेस को हमें सॉरी राउटर के इस इंटरफेस को हमें आईपी एड्रेस देना है. ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला नेटवर्क है. ठीक है, आई एम इन ओके दिस द स्विच R1. सॉरी, व्हाई एम आई कमिंग स्विच 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 क्यों आ रहा है पता नहीं चल रहा. सो आई एम इनटू R1 and I'm configuring this interface. ठीक है, इस इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ by assigning the IP address. Now, what IP address should I assign? तो क्वेश्चन इज दैट कि राउटर के इस इंटरफेस को मैं क्या IP address assign करूँ? So the answer for this is assign any IP address that belongs to this network. इस नेटवर्क से जो भी IP address आता है, अब उस नेटवर्क के IP address को कॉन्फ़िगर करें या असाइन करें. तो 2.0 में कौन से आईपी एड्रेस आते हैं? 2.1 है, 2.2 है, 2.3, कोई भी आईपी एड्रेस आप दे भले, ठीक है, बशर्ते वो 2.0 के नेटवर्क में. सो आई असाइन द आईपी एड्रेस फॉर दिस एज 192.168.2.25. 25 है ना ऑलरेडी, सॉरी 29. परफॉर्म द एंड ऑपरेशन ऑफ दिस. ठीक है, and you notice that this IP address belongs to 192.168.2.0 network. Am I correct? Yes, sir. Fine. Now, the moment I assign the IP address to this, okay, look here, this switch has generated a message. Now, what is this message is? ये कौन सा मैसेज है जो राउटर ने जनरेट किया है? सर ये ARP ब्रॉडकास्ट मैसेज है, message. आर्प मैसेज जो होता है. Okay. This is a typical ARP message. So look here, guys.
as I assign the IP address to a computer, and as the computer is generating the ARP message, certainly router is also behaving like a computer. He is also generating a ARP message. So that's the reason I have said that each interface of a router is behaving, yeah, acting as a computer. Now, what is the advantage of this? Okay, if this router is behaving like a computer, what is the advantage of this? So look here, this is the advantage. So okay, the moment he generates the ARP message, what is going to happen now? What is R1 going to do? R1 is going to send this ARP message, okay, within the network of 2.0. So where is 2.0 network? Okay, on the left hand side of a router, which I have highlighted it with green color. Are you getting me? Fine. Let us recreate the scene once again. So here am I. Okay, I have taken the scene, and look here. I am once again assigning the IP address. The moment I assign the IP address, the ARP message is generated. Now this ARP message is belonging to 2.0 network, and this 2.0 network, okay, the moment it goes there, okay, उस network के switch को जाता है, and what is switch going to do with this? Is going to broadcast. So look here, both the computers, which is 2.25 and 2.3, both these computers will be knowing, yeah, will be coming to know about this router who has the IP address of 2.29. Are you getting me? What is happening over here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो राउटर क्या क्या काम कर रहा है, देखो, ठीक है। सो दो फीचर्स है, ठीक है। अभी तक मैंने दो फीचर्स यहाँ पे लिखा है। फाइन। नाउ what about this interface? Let me color it first. So since it is belonging to different network, so that's the reason I am coloring it with different network. ठीक है, अलग दूसरे कलर से इसे करता हूँ, ठीक है। So green is one that is belonging to 2.0 network, and orange is one that is belonging to 172.16.0.0 network. Fine. तो ये यहाँ पे है, ठीक है। Now we have assigned the IP address to the interface of R1, and here, okay, we have assigned the IP address here. ठीक है। Now the line that is connected from R2 to S2, ठीक है, R2 से S2 को जो लाइन कनेक्टेड है या जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस का नाम है, ठीक है, 0/0/1, and this interface also has a MAC address. Now if this interface has a MAC address, okay, we have to assign the IP address to this. Now what IP address should I assign? IP address assign क्ला, करना है तो क्लास क्या बी का IP सर, address assign करें? ठीक है, बिलोंग्स टू क्लास बी। क्लास बी का नहीं, थोड़ा करेक्शन करता हूँ, ठीक है। क्लास बी के 172.16 का कोई भी आईपी एड्रेस ले सकते हैं, ओके क्योंकि क्लास बी की रेंज बहुत बड़ी है। इट 190 is also coming in there. Fine. ओके So the IP address that belongs to 172.16.0.0 network, any IP address that belongs to that is applicable, and it will be taken over here. So you take any IP address. So I take the IP address as 172.16.100.100 because it is available and it is belonging to perform the subnet mask. The moment I assign the subnet mask, okay, I perform the AND operation. The network address is 172.16.0.0. Okay, and
The moment I assign the IP address, look here, it has generated the ARP messages. Okay. So what is the need for this? Okay. What is the need for the ARP message? So he look here. ठीक है. इसे मैं ठीक है IP address assign करता हूँ तो double ARP निकले. Two packets are generating the ARP. Now which are the two packets? The first packet is of 2.0 and the second packet is of 172.16.0.0. तो दो आर्क मैसेजेस जनरेट हुए हैं और अब देखो दोनों आर्क मैसेजेस अपने रेस्पेक्टिव नेटवर्क्स की तरफ जाते हैं. नोटिस वन थिंग, both these ARP messages will be going towards their respective networks. They are not crossing each other. Fine. So the packet that is going towards S1 is the packet which is has the IP address of 17 okay of 2.0 network. I don't know. I know. I can't remember now what is the IP address. Whatever the IP address is, it is. And the packet that is going towards S2 is that packet which we have assigned this one. Okay. So look here. So this is how respective computers that belongs to the concerned networks will come to know about the interfaces of R1. Okay, got it. So basically, okay, if you say me how many IP addresses या how many computers are available in this 2.0. Okay, 2.0 में अब कितने connections हैं? I will go and say दो. there are three connections. Three, not two. क्यों? पहला कनेक्शन है 2.25, दूसरा कनेक्शन है 2.3 और तीसरा कनेक्शन है R1 का ये इंटरफेस. ओके. और Yes, ठीक sir. है, यहाँ पे क्या है? ठीक है, 172.16 में कितने कनेक्शंस हैं? यहाँ पे भी तीन कनेक्शंस हैं. 172.16.15.43, 172.16.29.56 चलो बाहर चलो. and 172.16.100.100. So there are three connections in orange network as well. आरू आरू जैसे बोला बाहर चलो. Okay, got the point. बात So माने जब क्लास हो okay, जाएगी. चलो here चल जल्दी. 2.25 will be aware of all the green networks, all the green connections, and 15.43 will be aware of all the orange connections because ARP messages only are exchanged within the networks, and within the networks, okay, they are crossing to each other. Fine. Are you getting me? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर आ Yes, रही है. sir. Fine. Now the third process, yeah, the third feature of a router. Router has the ability to read IP address. Router has the ability to read IP address. Now, what does it mean? If 2.25 has to send a message to 5.43, then he's going towards router. Router is going to check read the IP address, and looking into the IP address, he's forwarding that to the respective destinations. This is what a router does. I will let you know. Okay, in the coming days, yeah, in the coming time, I will let you know how is this possible. Okay, got it. So, okay, this was all about router at this moment. What we will do is we will take a break of 10 minutes. Okay, Okay, and sir. after 10 minutes, I will explain you the rest of the part of this device. Okay, sure. So it's 9:53. At the most, we will be back by 10:09. Sorry, 8:53. We'll be back by 9:05. Not more than that. At the most, 9:05 तक हम वापस आते हैं. Okay.
Yeah. Chalo, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So we have learned about the three features of a router, and there are many other features that we will be starting across as well. But now, okay, we have to try to understand one thing. Yeah, we have to figure out one thing. And what is the thing that we have to figure it out is this one. Now, since we have configured each and everything, now let's say that if I want to send a message from 2.25 to 15.43, अगर मुझे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मुझे अगर मैसेज भेजना है तो क्या अब कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा? चलिए देखते हैं कि होता है या नहीं. सो लेट्स चेक द आईसीएमपी मैसेज. ठीक है, तो क्या अब ये मैसेज जाएगा? क्योंकि राउटर से हमने कनेक्ट किया है, राउटर को आईपी एड्रेस असाइन किया है. विल द मैसेज ट्रैवल अक्रॉस दिस? लेट्स टेक अ नोट ऑफ इट. So you notice that the message is not at all delivering. Message is not at all picking up. Your message is not at all delivering. Why is it so? We will have a look on it. Let us try to send a message from 2.25 to 2.3. 2.25 से 2.3 की तरफ हम मैसेज भेजते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. तो यहाँ देखिए 2.25 से 2.3 जा रहा है, लेकिन 2.25 से, ठीक है, दूसरे नेटवर्क की तरफ नहीं जा रहा. और ये ऐसा क्यों है? Why is it so? Because there are many reasons, but I will just tell you the one prime reason for this. एक ही आंसर है और उस आंसर को अच्छी तरह समझो. 2.5025 knows very well about 2.3 network या 2.3 कंप्यूटर. 2.25 को 2.3 कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता है. Now what do I mean सब कुछ पता है? Whenever you want to send a message, fine. What are the parameters that are required? IP address and MAC address. Am I correct? So 2.25 very well knows the MAC address of 2.3, and that's the reason he can add layer 2 informations, okay, very easily. And since he can add the layer 2 information very easily, packet is ready for traversal, and the same is being, okay, read by the switch because it reads the MAC address, and appropriately it is being delivered to the destination. Fine. But when we have to send any message across the network, okay, with an ICMP message, 2.25
Okay, we can easily add the IP address because we are specifying the IP address. But this 2.25 knows the information of MAC address informations of this 172.16. No. So where should he send the message? That is one reason. Okay. Second point, whatever the packet is being sent, where do I have to send this message? Do I have to send to 2.3? Do I have to send to S1? Do I have to send to S2? Where do I have to send? So S2, S1. To the Okay, route. we have to send it to the router, but okay, how to send it? Okay, of course we have to send it to the router, but the question is how are we going to send it? Because okay, in the IP address, if we write the destination IP of our router, then the packet will just deliver till router. Router will not deliver it to the orange network because the destination IP address has changed. और गेटिंग में मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है सो क्वेश्चन ये है कि पहले ठीक है ये हम राउटर तक भेजे तो भेजे कैसे सो हम ये राउटर तक भेजते हैं वी डू सेंड इट द पैकेट टिल राउटर बाय स्पेसिफाइंग द डिफॉल्ट गेटवे तो at the end machine now what are end machines in this network which are the end machines the end machines are computers because after that there is nothing else so these are the end part of the network so that's the reason and we are calling it as end machines so whenever we are configuring any end machine we have to configure the default gateway now what gateway okay what is the gateway should I configure we have to configure the gateway of router which is 2.20 में तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो आईपी एड्रेस हम स्पेसिफाई करते हैं वो राउटर का रहता है which is 192.168.2.29 okay now the moment I specify okay this IP address अब देखो the packet is ready to deliver till router just by configuring it as the default gateway okay the end machine came to know how to reach yeah how to send it towards the router so the question is that what is a default gateway क्या है ठीक है so default gateway is actually the entry and exit point of my network मेरे नेटवर्क का अगर कोई एंट्री और एग्जिट पॉइंट अगर कोई है तो वो डिफॉल्ट गेटवे है Yes, sir. ठीक है होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दिस आपके घर का गेट क्या है व्हाट इज द गेट okay of your house yeah of your building gate specified that is the entry and exit part of your house and the outer world isn't it so here is also gateway specifying the same okay default gateway means that what is the last exit point of green network so what is the last exit point of the green network it is of course r1 this interface which is 0/0/0 so here we have to specify the default gateway as 192.168.2.5 okay certainly okay here also we have to specify the default gateway as the gateway of r1 गॉट द आइडिया ठीक है डिफॉल्ट गेटवे क्या करता है डिफॉल्ट गेटवे एक्चुअल में इन मशीन्स को आइडिया देता है कि नेटवर्क के बाहर अगर आपको कुछ पैकेट भेजना है तो वो पैकेट पहले आप राउटर तक भेजें फिर राउटर आगे डिसाइड करता है कि इसे किस तरह से भेजें आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि नेटवर्क के बाहर अगर कोई पैकेट आईपी एड्रेस है जिसे आपको भेजना है
तो आप राउटर तक उसे भेजें। दैट इज योर प्राइम ड्यूटी, दैट्स इट। If anyone wants to go to Taj Mahal, okay, drop them to Agra first. So junction is what? Junction is Agra. Okay, of course you want to visit the Taj Mahal. That is the final destination. But in order to go to Taj Mahal, which city do I have to reach first? I have to reach to Agra, isn't it? So this is what it is. Okay. So the city is what the router is. ठीक है, तो सबको पहले आगरा तक छोड़ो, which is R1। और R1 के बाद ठीक है, वो ताजमहल को किस तरह से लेके जाना है वो देखेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, सो इस तरह से ये होता है, राइट। अब ठीक है, यहाँ पे भी जो ऑरेंज वाले नेटवर्क मशीन है, इनका डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा, क्या आना चाहिए? 172.168 dot 172 100.100. 100.100 वाला। ठीक है, जो राउटर का आईपी एड्रेस है ऑरेंज वाले का, वो आएगा विच इज 172.16.100.100। तो basically you notice that okay, we have to configure default gateway on all the end machines। मेरे जितने भी एंड मशीन्स हैं उन सबको डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। ओके, अब जब मैंने डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया है, अब मैसेज भेज के देखते हैं सोर्स आईपी से डेस्टिनेशन आईपी की तरफ, विच इज 192.168.2.25 से लेके 172.16.15.43। ठीक है, अब क्या पैकेट जाएगा, चलिए देखते हैं। सो पैकेट पहले कहाँ से कहाँ जा रहा है? पैकेट पहले जा रहा है S1 से R1, R1 से देखो, अब पैकेट अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। Okay, so by specifying the default gateway, this is how the messages are traveling from one point to another. Okay, any doubt in this part till now, whatever I have explained? नो सर। हेलो Yes, सर, ये डिफॉल्ट गेटवे कैसे चलाए वो मैं नहीं समझ पाया। ये जो ग्रीन कलर का नेटवर्क है, इस ग्रीन कलर के नेटवर्क का सबसे आखिरी नेटवर्क या आखिरी गेट कौन सा है? एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है? नेटवर्क को देखे और नेटवर्क को समझ के बोले। ठीक है, इस ग्रीन कलर का जो नेटवर्क है, इसका सबसे आखिरी पॉइंट कहाँ है? नेटवर्क के बाहर जाना है तो उसका आखिरी स्टेशन कौन सा है ग्रीन वाले का? राउटर है R1। तो ठीक है, R1 का जो आईपी एड्रेस है ग्रीन वाले नेटवर्क का, वो डिफॉल्ट गेटवे की तरफ क्या कॉन्फ़िगर होगा। दैट्स इट। अच्छा, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। ओके, एनीथिंग एल्स? सर यस। सर राउटर ने सिर्फ इसी को मैसेज भेजा एंड मतलब राउट 15.43 को, हाँ हाँ, 29.5 इसको नहीं भेजा, बट गेटवे सेम है। हाउ इज पॉसिबल? क्यों पॉसिबल, ऐसा क्यों है? ठीक है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, आईसीएमपी मैसेज को देखे, सोर्स आईपी एड्रेस 25.2.25 है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 15.43 है, तो इसमें 15.43 कहाँ है? यहाँ है, तो राउटर उसी को भेजेगा ना डेस्टिनेशन की तरफ। ओके, राउटर हैज द एबिलिटी टू रीड आईपी आईपी एड्रेस, एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को देख के ही वो फॉरवर्ड करेगा। तो सर एक बार में कई सारे आईपी एड्रेस को फॉरवर्ड कर सकता है राउटर? एक बार में कई सारे आईपी एड्रेस को फॉरवर्ड मतलब क्या था इसका मतलब, समझा नहीं मैं। जी सर, अभी मैंने मैसेज को भेजा था यहाँ से
Mm-hmm. 0.5 से इधर भेजा Mm-hmm. था, तो 0.43 यानी कि डेस्टिनेशन हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, हमें दो तीन डेस्टिनेशन दे सकते हैं। एक पॉइंट पे एक ही दे सकते हैं, ठीक है। अब पहले इस पे ये दिया, ठीक है, मान ले दूसरे पैकेट से इसे दे दिया, तीसरे पैकेट से इसे दे दिया, तो आप दे सकते हैं मल्टीपल पैकेट से मल्टीपल डेस्टिनेशन है, लेकिन एक ही पैकेट एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, मल्टीपल डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाएगा। समझे? इस तरह से, ओके, फाइन। अब ठीक है, यस देर आर सम insights which we have to understand. Okay, I have shown you the end part that the router is okay delivering the packet, no doubt in it. But okay, many things are there which still has to be explained. What are those things that I will let you know in the tomorrow's class, because we have to understand some concepts like what you say, the network address. Okay, how does the router is actually sending, because you look at the routing table, okay. So I will let you know what is routing table, what is network table, ये कल ही बताता हूँ, because as I said, basically router is meant to connect networks, so he has the information of only networks. He does not have the informations of any end machines. राउटर के मेमोरी में सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रहती है। राउटर के मेमोरी में ये जो एंड मशीन्स हैं, इनका एक भी आईपी एड्रेस उसके मेमोरी में नहीं रहता, और उसकी मेमोरी का नाम क्या है? उस मेमोरी का नाम है नेटवर्क टेबल या राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल कल ही दिखाता हूँ, और राउटिंग टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखाता हूँ। फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो राउटर किस तरह से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचा रहा है, ये सब प्रोसेस हम कल देखेंगे। कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा। Tomorrow's class will be going to be the important one, so try to be on time and try to uh, come up with a notebook and a pen, so that once you understand the tomorrow's class, 60% of CCNA is what you are going to understand. Okay, so I will Okay. stop it here because only 7 minutes are remaining. I don't want to, okay, explain Sir, सर can देन I anything in ask you this seven something? minutes. Sir? Yes, please. Yes, go Sir, ahead. Rishabh this side, sir. Yeah, tell me, Rishabh. Sir, ये सर राउटर को हम लोग कमांड लाइन से कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे सर? TLM में जाना है, ठीक है। आगे अगला हफ्ता जो है ये पूरा राउटर पे ही कमांड काम करना है। तो अगले हफ्ते पूरा का पूरा राउटर पे किस कौन सा कमांड क्या टाइप करना है, ये अगले हफ्ते में बताऊंगा। जैसे वो होस्ट नेम वगैरह सब देना पड़ता है सर, वो वो मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। अभी तो राउटर क्या काम करता है वो देखते हैं। सर सर फिर सीसीएनए की काम क्या क्लास पता चला उसके बाद फिर ये होता है। सर पीसी को डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ स्विच? विदाउट स्विच नहीं कर सकते। कर कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, एक एक काम करो, म्यूट करो पहले वो। हम पीसी को राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन राउटर के पास दो ही इंटरफेसेस अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? हम दो ही मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं तो 15 मशीन्स मिला के एक नेटवर्क को लगा सकते हैं। यू कैन कनेक्ट एनी डिवाइस, राउटर और आरू स्विच, बट नेटवर्क मेरा क्या कर छोटा रही है। है? ठीक है। अब वो जो मैडम है उनका क्वेश्चन मुझे सुनने दो प्लीज। हाँ मैडम, आप कुछ बोल रहे थे। सर सीसीएनए की क्लास कब तक चलेगी सर? नेक्स्ट सैटरडे को। टुमारो ओके सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे। ओके। Excuse me, sir. आरू यस। चलो Sir, if switch is देख connected के to नीचे। only to computer. Assume one computer is class B and other computer is class C. Then come which network, sir? Router is meant to connect to different networks. Yes, he is going to connect both the computers. Yes, sir. Then switches become which network? Which? Which network? Then switch is connected to two different classes. Then switch become which network?
Like it is two different networks. If you're connecting a router with a computer, then No, where is the switch being existing? it is connected to only switches, sir. ड्रॉअर में डाल देना No router without Uh, switches. Sorry, please come again with your question. Switch is connected to router to which network? Switch is connected to two computers, Mm-hmm. and then computer one is the class B, then computer two is the class C. Got it. Got it. Got it. Got it. Okay. So I in this case, okay, router is going to communicate only with one of the network. Okay. So I got it. If it is let us say 2.25 and if it is let us say 3.25. Okay. So the network address is 2.0. Okay. And here the network address will be 3.0. Isn't it? So these are the two network addresses. This is what you meant to say, isn't it? So Yes, in sir. this case, okay, router is going to communicate with which one? Is it your question? Sir, you can change the IP address, sir. 172.62 for I one. got it. The moment I change it up, ठीक है चलो. Hmm. What should be the default gateway according to you? Okay, okay, sir. Sir, Got it? change the subnet mask into class B, sir. Do I want me to remove the default gateway? No, no, sir. Subnet mask change into class B. If it is possible. You want to ping to this one now. Why don't you do this experiment on your own machines? Okay, Ping. You tell me what is to be done. Ping. Where should I ping this? class. Which machine of class B beta? Sir, I'm asking that if which is connected to net to PC. You are from If one, South India. Okay, you are from South India. yes, yes, sir. Which part do you belong to? Sir, please. Sorry, Karnataka, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. ठीक है. ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుందో Sir, I'm asking that. తెలుగు చెప్తాను. ఓకే, తెలుగు Okay, చెప్తాను. ठीक है. Tell me your okay. problem. సార్ ఇప్పుడు మనం PC టూ పీసెస్ కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి సార్. Sorry. ఒక ఒక స్విచ్ కి టూ పీసెస్ కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి సార్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? ఓన్లీ స్విచ్ కనెక్ట్ ఓన్లీ టూ పీసెస్. నో రోటర్, No routers, nothing. సార్. ఓన్లీ స్విచ్ అండ్ టూ పీసెస్ సార్. Actually, na. Actually, na. ठीक है. The voice is so okay. Your voice is low, and the surrounding where you are sitting, that voice is very big. So what you are speaking, I am totally unable to understand anything. ఓకే, ఓకే, ఓకే. हेलो. Okay. It's better we और take it हो tomorrow. सकता है उनका क्वेश्चन ये था जो नेटवर्क ग्रीन वाला है उसके अंदर अगर अलग दो नेटवर्क बना लिए यानी दो तो एड्रेस मैंने यहाँ किया क्या है फिर 2.0 वही किया 3.0 आपने क्या है करेक्ट। फिर यहाँ पे? हाँ वही पूछ रहा No, हूँ। sir. Different classes, sir. 192 क्लासेस means C and B. He is यस asking सर. like Why are you going for different classes? Okay, if they are in the different network, what is the harm in that? Even though if you're putting it with different class, let us say 172.16.0.0, यस okay, yes, yes, what is the harm in that? They are ultimately, if they are in the same class, they are in the different network. If they are in the different class, they are in the different network. Got my point? What yes, I'm sir. saying Got this. it. हेलो. Okay. So here is what the solution is. Okay. So don't consider if they are in the same network, they are able to communicate with each other. Okay.
Chalo, we will take tomorrow because it's already 9:30. My next batch is waiting now. Okay, I will take the class questions tomorrow now. Thank you, Bye sir. bye. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.